नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 22 तारीख को यहाँ एक और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेट बैंक 50% पेंशन रेस्टोरेशन के लिए भी केस लगा हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है, दिल्ली में आधे दिन की छुट्टी है, 2:30 बजे के बाद कोर्ट शुरू होंगी और इस केस से संबंधित जीओपी के कन्वीनर श्री उमेश शर्मा जी ने एक मैसेज भेजा है कि मैं आपके समक्ष रखूंगा, जिससे कि आपको अपडेट मालूम हो जाएगा। डियर ऑल, ओम जय श्री राम। इट्स फुल फंक्शनल डे टुमारो एट दिल्ली हाई कोर्ट एंड आई वुड बी लीविंग टू दिल्ली along with my trusted friend Sri J.P. Goyal early morning. Despite IMD warning of severe cold and dense foggy days ahead, seek your blessings. Around 100 messages of good wishes and suggestions have been received, and I thank you all for your inputs, which would strengthen our case further. Broadly speaking, some of the suggestions are about legal and dictionary meaning of family. Rectify extra. As already informed, all these points are part of our written pleadings, public writ petition, and have been discussed with Sri Sai Deepak by Sarvasri Manohar Lal and A. Subramaniam and myself. Also, Advocate Alex Joseph has also been adequately briefed to plead for a retrospective effect to the issue of 50%. In the meanwhile, I have done in-depth study of notification of 10th November 23 sent by DFS to SBI and also discussed with retired High Court Justice and former Additional Solicitor General. Both are based at Merit post-retirement. Dear, unanimous opinion has been government accorded sanction given with prospective effect. It is against the law laid by SC in Civil Appeal number 1123 of 2015 in State of Rajasthan and others versus Mahendra Nath Sharma and others on 1st July 2015 by stating that pension shall not be less than 50% of the running pay band corresponding to the pre-revised scale of pay. The respondent bank government has ignored the law by postulating the prospective payment with a view to denying the rightful pension for prior period. Thanks to depth study and research work done by our seniors, Sarvasri, late PPR Upadhyay and Anthony D. Kuto, the above quoted SC order, besides several other related orders, are part of our writ petition and written pleadings submitted to the Honorable Court. Also, we have also brought in notice of Sri Sai Deepak, Alex Joseph and SC order R.S. Pandey versus SBI, which reiterate that accrued right can't be taken away by framing such laws, which takes away benefit retrospectively. I assure you all on behalf of GOP to do whatever as a petitioner I am expected to carry out. Thanks a lot and profound regard. Umesh Sharma, 21/01/24 12:46 PM। दोस्तों, इस तरह ये उमेश शर्मा जी ने मैसेज भेजा है और वो आज दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ जा कर के केस का अपडेट लेंगे। अगर केस की सुनवाई होती है तो वो वहाँ रहेंगे ही, और सुनवाई नहीं होती, डेट पोस्टपोन होती है तो अगली डेट का मालूम हो जाएगा। जैसे ही हमें मालूम होगा हम लोगों को बताएंगे। इससे मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि इस बारे में अपडेट करें, तो मैं एक अपडेट देना चाहूँगा कि जो बैंक की तरफ से एफिडेविट फाइल होना था कंप्लायंस का, वो बैंक फाइल कर चुका है। हालांकि वो एफिडेविट कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों ने उस पर वीडियो भी बना दिए
इसका मेरा ये मानना है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट पे वीडियो बनाना ठीक नहीं है जब तक कि हमें कोई ऑथराइज राइट ना हो, अदरवाइज़ ये बैंक का केस एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। नए नए वीडियो के लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।